So good evening. Here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director to Sambodhi Career Academy, Thane, Mumbai region. And this is our special batch for the preparation of 2024 April and September 2024 NDA and NA examinations. Okay, and accordingly, if you see the timetable of 2024 examinations or NDA, okay, and at the same time, UPSC conducts a CDSC examination also, which is on the basis of graduation. Okay, so for both the examinations, for NDA 1 and NDA 2, okay, so for NDA 1 and CDSC 1, okay, the advertisement is appearing on the 20th December 2023, and that NDA 1 examination and CDSC 1 examination. So NDA is on the basis of 12th appear, CDSC is on the basis of graduation, both for girls and boys, and for arts, commerce, science student. Already I have discussed about you this thing. So that examination is scheduled on 21st April 2024. Okay, and the NDA 2, that is NDA and NA2 and CDSC 2 examination. So for that, advertisement will declared on 15th May 2024, and the last date to apply, it would be 4th June 2024, and the second examination, it would be on 1st September 2024. Okay, so accordingly, coming, like if you are counting right from today, that is on 14th October 2023, so we are having, now we are in the middle of the October, so October mid to November mid and November mid to December mid. Okay, so November and then December. So almost for this year, we are having almost 75 days. Okay, so 30 plus 15, so 75 days. And then if you are counting for April examination, so we are having 21st April. So again, January, February, March. Okay, and then April. Okay, so 20 days. So 90 plus 20, 110, and 110 plus 75, so 185 days. Okay, so in terms of days, you are having 185 days. Okay, January, February, March, and April. Okay, so 3 and on average 30 days, and then plus 20 days. So 90 plus 10, 20, 110, and then 75. So 185 days. Okay, so you are having 185 days for the preparation of April exam. But those who are appeared in 12th standard, they are only eligible for that NDA 1 examination. And those who are in 11th standard, those who have already finished their 12th standard, so they are eligible for that April examination. Okay, and those who are in at present in just entered in 12th standard. Okay, so they are eligible for, as per the date criteria. Okay, as per the birthday criteria, they can appear for that September examination. Okay, तर हे लक्षात ठेवा, तुमचा डेट क्रायटेरिया असतो, डेट ऑफ बर्थचा क्रायटेरिया असतो, 12th अपीयर पाहिजे असेल तुम्ही, आणि जे 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 आता 11th स्टँडर्डला आहेत, 11th स्टँडर्डला आहेत, तर ते नेक्स्ट इयर 12th मध्ये जातील. ओके, सो त्याच्यामुळे त्यांना जी एक्झामिनेशन आहे नेक्स्ट इयरची, ती सप्टेंबरची देता येईल. ओके, बिकॉज आफ्टर मे यू वुड बी इन द 12th स्टँडर्ड. ओके, सो 12th स्टँडर्ड अपीयर वाल्यांसाठी एप्रिलची एक्झाम, आणि नेक्स्ट इयरला जे 12th स्टँडर्ड जातील मे जूनच्या नंतर 11वी संपून, तर त्यांच्यासाठी सप्टेंबरची एक्झाम. ठीक आहे. सो एनिवे, वी इन with respect to our next year's preparation, we started our constitution, and initially in the constitution, we discussed so many topics earlier. So we discussed making of the constitution. We discuss that process of making of the constitution earlier,
9 December, 11 December, 12th, 9 December, 11 December, 13 December. Then we discuss that drafting committee, different major committees, minor committees, the chairperson of the different committees. Then we also discuss about uh, different schedules of constitution, parts of the constitution. Okay, and we discuss different articles, right, from Article 1. Okay, so Article 1 to 5, then 12 to Article 1 to 5, then Article 1 to 4, citizen were related to union and states, then Article 5 to 11 related to citizenship, then Article 12 to 35 related to fundamental rights, then Article 36 to 51 related to DPSP, direct principles of state policy, and then Article 51A related to fundamental duties. Okay, and during this discussion, we discussed that fundamental duties. Okay, the fundamental duties. So all these fundamental duties, like earlier, these fundamental duties were not included in the constitution, original constitution. But there was an amendment, and through that amendment, the inclusion of fundamental duties into constitution. Okay, and actually, the duties were suggested by the Savarna Singh or Swarna Singh committee, and finally those duties were included. So actually, there were 10 duties, and later on, the 11th duty added to the that list of fundamental duties, right? So, like in last session, we stopped with these fundamental duties, and I hope you have gone through all those notes which I have dictated through regular classes. And later on, we started economy section. Okay, biology section is also going on in our classes, right? So, madam will finish very soon biology section also. Okay, I will finish your economy section very soon. Okay, constitution section, I will finish very soon. Okay, so ultimately we are working on those different sections, okay, which have been included in your NDA and any examination. Okay, within these 75 days, okay, by the end of the December, we shall try to finish almost all the important topics. Like I will finish entire general studies for 200 marks, because our strategy is to secure maximum marks in a general studies section. So out of 50 questions, I would make you eligible to solve correctly at least 35 questions, at least 35, because there is a negative marking system. So if you solve 35 questions with negative marking system, so 35 into, we have for one question, we are having 4 marks. Okay, so even if you consider 30, so 120 plus marks. Okay, 120 plus marks. So if you are scoring 130 marks also, in that, out of that 200 marks, 120, 130 marks, so that it would be a great score. In English section, if you are scoring again 30 questions, okay, so again 30 into 4, 120. So 120 plus 120 means 240 marks. Okay, 240 marks, right? And in PCB section, physics, chemistry, biology group, again, if you are scoring 120 marks, okay, so keep in mind ki you can, if you want to cross that cutoff, if you want to achieve that cutoff, which is regularly of NDA and examination, that is 350, 375 or 400 out of 900 marks, then in every section, if you are scoring 120, 120, 120 marks, okay, out of this 200, 200, 200 marks, and this is possible. So 120 into 3 means 360. So you can cross your cutoff only on the basis of your 600 marks general ability test. And if you are scoring 100 plus marks, okay, out of 300 marks in math section, then your score would be 450 plus. Okay, so our strategy or our aim is to attain
to secure these 450 plus marks. If you secure 450 plus marks, and if you secure almost 400 marks in SSB, okay, in SSB, then nobody will stop you from securing your post to NDA and examination. So this is very strategic examination. Almost I always say that all competitive examinations are very strategic. So one should have strategy. Okay, so once again, I am giving you reminder about the strategy, because unless and until we have this strategy, we have that mindset, how to qualify this examination, how to go through uh, those all sections, how to attain maturity, authority over all these sections. So one cannot crack written examination, or one cannot crack that SSB also. Okay, so moving ahead, okay, we are continuing our discussion related to constitution. Okay, so today and tomorrow we are continuing constitution. Already on Monday, we shall try to finish economy section on the conceptual basis, and later on through the current affairs section, I will finish your both economy and the constitution. Okay, because economy and constitution are those topics which need understanding of the current affairs also. Okay, so now next is, now I will go through important articles, and I will take the constitution in a sequence, because with respect to NDA examination, as such, there is no need of very conceptual understanding like UPSC civil services or the IAS examination. Okay, in this examination, even if you are having knowledge of important articles and somehow conceptual clarity, somehow analysis of certain sections, then that will do. Okay, on the basis of that, you can you can solve those questions. Okay, so now here write down next topic, that is president and the vice president. Okay, president and the vice president. President and the vice president. Okay, write down. Okay, so I will discuss and I will dictate also. So in the both the way we are going. Okay, so president and the vice president, write down. Articles 52 to 78. Articles 52 to 78 in part 5. Articles 52 to 78 in part 5. Everybody is writing? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Article 252 to 78 in part 5 deal with union executive. Deal with union executive, which consists of president,
vice president, which consists of president, comma, vice president. Okay, so if you get a question, ki union executive consists of what? Okay, so it consists of union executive consists of president, comma, vice president, comma, the prime minister. Okay, that is prime minister. That is Pradhan Mantri, prime minister, Pradhan Mantri, comma, the council of minister, president, vice president, comma, the prime minister, the council of minister, and the attorney general of India. And the attorney general of India. Attorney, A-T-T-O-R-N-E-Y. Attorney, A-T-T-O-R-N-E-Y. Attorney General of India. And the Attorney General of India. Attorney General of India. Okay, so see, if you get a question, ki union executive consists of what? So the answer is president, vice president, the prime minister, the council of minister, okay, and the attorney general of India. And the attorney general of India. Okay, so see, prime minister and then council of minister. And I have told you, council of minister consists of what? That is, council of minister मध्ये कोण कोण असतं? Who is a part and parcel of council of minister? Who are the ministers of council of minister? So who are the ministers of council of minister? या council of minister मंत्रिमंडळ मध्ये कोण कोण असतं? कौन होता है मंत्रिमंडल में? council of minister consist of cabinet minister, then minister of state, council of minister, minister of state and deputy minister. कौन रहता है council of minister में? Cabinet minister, okay, then minister of state and deputy minister. Understanding? Yes. Council of minister, मंत्रिमंडळ. Okay, in Marathi or in Hindi, the word is मंत्रिमंडळ. So मंत्रिमंडळ consists of what? Council of minister. Council of minister consists of cabinet minister, minister of state and deputy minister. Okay. Then the write down next line. The president is the head of the Indian state. The president is the head of the Indian state. The president is the head of the Indian state. The president is the head of the Indian state. He is the first citizen of India. He is the first citizen of India. He is the first citizen of India. And he is the first citizen of India and acts as the symbol of unity integrity, INTEGRITY, and acts as the symbol of unity, integrity, INTEGRITY, and solidarity of the nation. Sir, एकदा repeat करना last line. He is the citizen of India and acts as the symbol of unity, integrity, and solidarity of the nation.
Solidarity of the nation. Solidarity of the nation. Solidarity of the nation. Solidarity of the nation. Solidarity of the nation. Okay. Then write down. Election of the president. Election of the president. Election of the president. Write down. President is not directly elected. President is not directly elected. President is not directly elected. He is elected by. So president is not directly elected. So राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन बताओ। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है? लाइक व्हाट इज voting. हाँ, वोटिंग कैसे है? लाइक विच वोटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अच्छा, कौन चुन के देता है प्राइम मिनिस्टर को? पीपल। प्राइम मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर को चुनता है सर। प्राइम मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। ओके, कैसे? किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है? जैसे अब हमारे जैसे ये साहब है ना, जो 14 में भी प्राइम मिनिस्टर बने, 19 में भी प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर से उनकी लोग मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी, दे आर सेइंग दैट द सेकंड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही मोदी साहब ही होंगे, राइट? उनके जो भी कार्यकर्ता है, के पार्टी के लोग हैं, सो दे आर हैविंग दिस एम दैट द मोदी वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आल्सो, राइट? सो एनीवे, उनको जैसे हम लोगों ने वोट दिया है ना, हम लोगों ने वोट दिया। आपने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट दिया क्या डायरेक्टली किसी के? हैव यू गिवन वोट फॉर द फॉर स्पेसिफिक कैंडिडेट who is fighting the election for the prime minister? No, sir. We elect. No, We sir. vote for the party. Yes, yeah. So we elect members of parliament. Okay, we elect members of parliament, and what these members of parliament do, then suppose we are electing members of parliament, then who will become the prime minister? Hmm? Who will become the prime minister? See, we elect members of the parliament, right? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है भारत के, जिनका एज 18 इयर्स और उससे ज्यादा है, तो व्हाट वी डू, वी गिव वोट टू द पीपल दोज हु आर फाइटिंग इन इलेक्शन, राइट?
और फिर हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया is having different members of a parliament. Every state of India is sending members to the parliament, and that is based on the population of respective state. So छोटा स्टेट है तो एमपी कम रहेंगे, बड़ा स्टेट है तो एमपी ज्यादा रहेंगे। कौन सा स्टेट है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके which state of India is having the largest member to the parliament? Which state is having उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh, yeah, Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh is having the maximum population, okay, largest population of India, and accordingly, Uttar Pradesh is having the maximum number of constituencies, right? So in examination, you may get a question related to the constituencies also. Which state is having maximum number of constituencies, or which states are having how many number of constituencies? Suppose Maharashtra. So Maharashtra में महाराष्ट्र से कितने एमपी जाते हैं, बिहार से कितने जाते हैं, आंध्रा से कितने जाते हैं, तेलंगाना से कितने जाते हैं, केरला से कितने, तमिलनाडु से कितने, कर्नाटका से कितने, ओके, सिक्किम से कितने जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह वगैरह। सो member of parliament, okay, so member of parliament, that can be a question for your examinations। और ये बात ध्यान में रखो कि 2024 में महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस है एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंडली, अभी 2 महीने में 5 राज्यों के इलेक्शंस है, विधानसभाओं के इलेक्शंस है, विच इज कॉल्ड एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। So with respect to that also, you need to understand the membership of those state legislative assemblies। मतलब जो अभी 5 विधानसभाओं के इलेक्शंस है, उस विधानसभा के कितने मेंबर्स है, उस विधानसभा के कितने मेंबर्स है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी होगी, ठीक है। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखो। सो मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूं, उसके ऊपर काम करना। राइट डाउन असाइनमेंट, होमवर्क आप लोगों को करना है, ओके। होमवर्क लिखिए, लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट वाइज in India, list of member of parliament state wise in India, and list of member of state legislative assembly, and list of member of parliaments state wise in India, and list of member of state legislative assembly, member of state legislative assembly in India, and list of member of state legislative assembly in India। So इसमें क्या करना है आप लोगों को, what is your this thing? आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आवाज देते ना माझा, आप लोगों को ऐसा बनाना है, स्टार्ट लाइक स्टेट, ओके, देन एमपी दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड देन फिर एमएलए दैट इज मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं और इसको ये करता हूँ, दैट इज स्टेट और फिर उसका एमपी, मतलब ये लोकसभा के एमपी, और फिर एमएलए। अभी इसमें क्या करना है आपको, एमपी के कॉलम में फिर से
लोकसभा और दूसरा जो है ये राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में जो जाते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, सो स्टेट, तो स्टेट का नाम लिखना, एक जैसे महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, ए से चालू करो, ए टू जेड तक की जितने स्टेट स्टेट है महाराष्ट्र में वो। देन लोकसभा, लोकसभा में फिर एक लोकसभा के एमपी डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। और फिर एमएलए मीन्स जैसे महाराष्ट्र की विधानसभा है, तो महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स है, कितने एमएलए है, तो उनका आंकड़ा लिखो। ओके, फिर एमपी में कितने हैं, कर्नाटका में कितने, इस तरह से। समझ में आया आप लोगों को? यस, ऑल ऑफ यू? Yes, दिस इज sir. असाइनमेंट, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, एंड Yes, sir. I need this homework in next 2 days on Monday. On Okay, sir. Monday, on Monday you need to show me this assignment. ठीक है? You send me your assignment on my WhatsApp number. Okay, सागर लक्षात आलं? सागर, अनुराग, all of you, विनायक, युगांक, Yes, sir. Yes, sir. विक्रांश, ओम, Yes, sir. प्रद्युम्न, हे सर सगळ्यांनी एकदा परत करायचं सांगा ना, मला आहे. कळलं नाही कसं करायचं ते. अरे यार, काय कळलं नाही? हे बघ, एका साईडला तुमचा स्टेटचा कॉलम म्हणजे राज्य, त्याचे एक ते जेवढे राज्य असतील ते लिहायचे. दुसरीकडे एमपी, एमपी म्हणजे काय? मेंबर ऑफ पार्लमेंट, म्हणजे जो संसदेचा सदस्य असतो तो. मग त्याच्यामध्ये एक हे कर लोकसभा, असं हे कर, आणि दुसरं कर राज्यसभा. समजा आता महाराष्ट्र स्टेट आहे, महाराष्ट्र एक नंबरला महाराष्ट्र स्टेट आहे, इथे तू लिहिलं महाराष्ट्र. महाराष्ट्राच्या लोकसभेत किती रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे? ओके, समजा 50 असतील फॉर एक्झाम्पल. ओके, आणि राज्यसभेचे राज्यसभेमध्ये महाराष्ट्राचं रिप्रेझेंटेशन समजा 20 असेल, एक जस्ट एक्झाम्पल देतोय, तर इथे 50 ली, इथे 20 ली. ओके, आणि तिसरा कॉलम काय? एमएलए. एमएलए म्हणजे काय? महाराष्ट्राच्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीमध्ये, महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब महाराष्ट्र के विधानसभा में कितने मेंबर्स है जो डायरेक्ट इलेक्शन से जाते हैं, तो वो लिखो. अब कुछ जगह पे ऐसा है कि इन फ्यू स्टेट्स ऑफ इंडिया ओनली देर इज अ विधानसभा ऑल्सो एंड विधान परिषद ऑल्सो, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. तो अगर आप वो आपको मिल गया तो उसका भी आप लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र इटसेल्फ वी आर हैविंग विधानसभा ऑल्सो एंड विधान परिषद ऑल्सो. सो हमारे महाराष्ट्र के इसके पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे उद्धव जी ठाकरे, सो वो चुनाव में खड़े नहीं थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनको विधान परिषद से चुना गया बाद में 6 months के टाइम फ्रेम में, एंड देन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. सो बिकॉज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे could got a chance to become the chief minister of Maharashtra. Okay, if had there no state legislative council, it would not be possible for Uddhav Thackeray ji to become the chief minister of Maharashtra. Okay, समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, तो I hope you are understanding now. काय काय काढायचं आपल्याला? Yes, स्टेट. sir. हाँ, okay, and this is very important because see, because the elections are coming, and with respect to elections you should have this understanding. Okay, you should have this understanding. Okay, because this is very important to understand our this one also, है ना? भारत के मतलब भारत किस तरह से हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, हमारे देश की राजनीति किस तरह से चलती है, हमारे देश की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, ओके, ये कैसी चलती है. तो फॉर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवे, सो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का नहीं होता है. प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए नहीं होता. जब इलेक्शंस होते हैं
और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर इलेक्ट होते हैं, ओके, मेजोरिटी में जब सबसे कोई पार्टी होती है तो वो मेजोरिटी जो पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है वो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर होता है. ओके, दैट्स व्हाई व्हेन द भारतीय जनता पार्टी won the maximum seats in the election, okay, and they secured the majority of the seats, not majority of the votes. Some majority of the seats is important. So when some party is securing majority of the seats, then the leader of that party, he is having chance to become the prime minister, and that's why Narendra Modi became the prime minister of India twice earlier, right? चलो, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता. प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अलग से इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है. इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है. दिस इलेक्ट्रोल कॉलेज, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोल कॉलेज, यू वुड गेट क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है? इलेक्ट्रोल कॉलेज कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है? सो राइट डाउन, द प्रेसिडेंट इज not elected not directly by the people but by members of electoral college, ELECTORAL, but by members of electoral college, ELECTORAL, electoral college, consisting of electoral college consisting of number one, the elected members, the elected members of both the houses of parliament. Number one, the elected members of both the houses of parliament. सो पार्लियामेंट के जो दो सदन है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मींस पार्लियामेंट की जो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन जो है उसमें से इलेक्टेड मेंबर्स. तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. सेकंड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. The elected members of the legislative assemblies of the state, the elected members of the elected members of the legislative assemblies of the state the elected members of the elected members of the legislative assemblies of the state and third the elected members of the legislative assemblies the elected members of the legislative assemblies the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry, PUDUCHE double R. The elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry, PUDUCHE double R, Puducherry. Write down further this provision means that is elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry. This provision was added by the 70th Constitutional Amendment Act. This provision was added by the 70th, that is 70, Constitutional Amendment Act
of 1992, this provision was added by the 70th Constitutional Amendment Act of 1992 with effect from June 1st, 1995. With effect from June 1st, 1995. Okay, so this third provision, it was added through 70th Constitutional Amendment Act of 1992, 70th Constitutional Amendment Act of 1992, and it took effect from 1st June 1995. Okay, so see, once again, what I have mentioned you, what I have mentioned, electoral college consists of what? Electoral college consists of what? The elected members of both the houses of parliament. Okay. Elected members of state legislative assembly and elected members of legislative assembly of the Union Territories of Delhi and Puducherry. Okay, so if you get a question, the electoral college of the president consists of what? So the answer is, the most important thing is that in the electoral college of the president, the members are elected. They are not nominated. लक्षात ठेवा. आहे ना? बघा. पहिले याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं? Elected members of what? Both the houses of the parliament. Both the houses of parliament means if instead of this, if they mention elected members of Rajya Sabha and the Lok Sabha, both the houses, which are the houses of parliament? Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha. So what they have mentioned, elected members of both the houses of the parliament. Instead of this word, instead of this statement, they will mention elected members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. This is also correct. Elected members of Rajya Sabha and the Lok Sabha. So this is correct, right? So the elected members of both the houses of parliament are elected members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. So the elected members, if they mention the elected members of elected and the nominated members of both the houses of parliament, so this will be wrong, because nomination is different. Elected is different, nomination is different. So if they mention the elected and the nominated members of both the houses of parliament, just a minute. So elected members, and nominated members. So if they mention the nominated members, okay. So if they mention the nominated members, so nominated members cannot participate into the election of the president. Okay. Second मध्ये काय म्हटलं, the elected members of the legislative assemblies of the states, है ना? The elected members of the legislative assemblies of the state. So second याच्यामध्ये elected members of the legislative assemblies of the state. So again, if they mention elected and the nominated members of the legislative assemblies of the state, so that is wrong. लक्षात आलं? याच्यात काय म्हटलं आहे की elected members of the legislative assemblies of the state, right? Nomination हा शब्द आला प्रेसिडेंटच्या इलेक्शन मध्ये, तर
Okay, so see, yes, so elected members only participate in the elections of the president, not the nominated members. So everywhere हा वर्ड हायलाइट करून ठेवा, अंडरलाईन करा ह्या वर्डला तिन्ही ठिकाणी. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाऊसेस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली and elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Pondicherry. अच्छा, तुम्हाला हे कळलं का? थर्ड, that is elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry. In India, we are having two union territories where there are state legislative assembly. State legislative assembly म्हणजे काय? राज्य विधानसभा. मतलब ये जो है दो यूनियन टेरिटरीज, भारत में दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी है कि जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. तो दिल्ली में पता है आप लोगों को, दिल्ली में पता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है और दिल्ली में दिल्ली यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी है. वैसे ही पौंडीचेरी में वहां के चीफ मिनिस्टर भी है और पौंडीचेरी एज ए यूनियन टेरिटरी के सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर भी है. तो वहां के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं. ओके, सो नाउ टेल मी, इफ यू गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान में रहेगा आप लोगों के? Yes, sir. Okay, so keep in mind, because this is a very regular question for examination. This is very regular question for examination. Okay. Yeah. So further write down next line, next para. Thus the nominated members do not participate. Thus the nominated members do not participate in the thus the nominated members do not participate in the election of the president. पुढे लिहा. नेक्स्ट लाईन मध्ये if an assembly if an assembly is dissolved, if an assembly is dissolved, DISSOLVED, if an assembly is dissolved, the members cannot participate in the presidential election if the assembly is dissolved, the members cannot participate in presidential election, even if
even if fresh elections, even if fresh elections to the dissolved assembly, even if even if even if fresh elections to the dissolved assembly, even if fresh elections to the dissolved assembly are not held before the presidential election. Okay, so keep in mind, so actually what happened when there is in any state, okay, suppose in any state, if the state legislative assembly or if the assembly is dissolved, okay, if the assembly is dissolved, so there is a dissolution of assembly. Dissolution of assembly मतलब क्या है कि जो असेंबली होती है वेदर लोकसभा और वेदर विधानसभा, वो अगर डिसॉल्व हो गई मतलब बर्खास्त हो गई, तो बर्खास्त होने के बाद जहां की असेंबली डिसॉल्व होती है वहां के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्वालिफाई नहीं होते, मतलब दे कैन नॉट पार्टिसिपेट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, हाँ, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए। ओके, तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इतना ध्यान में रखो कि इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेशन नहीं रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, अगर ऐसा आपको आया एग्जामिनेशन में नॉमिनेटेड मेंबर का, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं होते, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। जितने भी होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द मेंबर्स कैन नॉट वोट इनटू द presidential election. Then write down value of the vote of an MLA. Next, write down next point, value of vote of an MLA. इसका एक फॉर्मूला लिखो, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, टोटल population of a state, total population of state divided by total population of state divided by total number of elected members, total number of elected members in the state legislative assembly. Value of vote of an MLA is equal to total population of state
value of the vote of an MLA is equal to total population of the state divided by total number of elected members in the state legislative assembly into या सगळ्याला into करा 1/1000. 1/1000. Sometimes you may get question related to this also. तो देखो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए. एक जो एमएलए रहता है, एमएलए मीन्स स्टेट का जो एमएलए रहता है, स्टेट का जो आपका विधानसभा का जो आमदार होता है, एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू आमदार. तो उसके वोट का वैल्यू कैसे निकलते हैं. तो सपोज महाराष्ट्र का आपको अगर निकालना है, महाराष्ट्र का if a person, if a MLA, if a आमदार from Maharashtra is voting into the presidential election, तो हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, 12 करोड़ है आसपास, 12 करोड़ के आसपास है. यस और नो. अरे 12 करोड़ के आसपास है कि नहीं. हाँ. तो सपोज महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, तो ऊपर में क्या आएगा 12 करोड़, राइट. और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा, उसके मेंबर्स है 288, 288. तो ऊपर होगा 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 288 इंटू 1/1000. जो भी नंबर आएगा वो क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए. समझ में आ गया फॉर्मूला. जस्ट सिंपली उसको याद में रखो कि आपके स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय आपके स्टेट के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स है वो इंटू 1/1000. सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए. ऐसे ही आपको किस तरह से वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओके, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह. ओके, सो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एंड वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इट विल बी डिफरेंट, है ना. तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की पॉपुलेशन और वहां के इलेक्टेड मेंबर्स इंटू 1/1000. ठीक है, ये हो गया. फिर सेकंड लिखो, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, value of the vote of an MP is equal to total value of votes, total value of votes of all MLAs, value of the vote of an MP is equal to total value of votes of all MLAs of all states, total value of votes, total value of votes of all MLAs of all states, value of an MA, value of the vote of an MP, value of the vote of an MLA, value of the vote of an MP is equal to total value of votes of all MLAs of all states, of all MLAs of all state, divided by total number of, divided by total number of, divided by total number of elected members of, divided by total number of elected members of parliament, total number of, divided by total number of elected members of parliament, total number of elected members of parliament.
Okay. So yeah, so we have written that total value of the vote of an MLA and the total value of the vote of an MP. तो MLA का निकालना है, तो population of a state divided by members of elected members of that state into 1/1000. And if you want to count the total value of the vote of an MP, तो ये जितने भी, हाँ ये देखो अभी हमें क्या है कि फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से हर एमएलए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके वोट की वैल्यू। और दूसरे फॉर्मूले में क्या करना होगा कि जितने भी एमएलए है ऑल स्टेट्स के, तो उनके जो वोट्स है ना, तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। तो सपोज जितने भारत में जितने भी स्टेट्स है ना, भारत में जितने भी स्टेट्स है, तो व्हाट वी नीड टू डू कि जितने भी स्टेट्स है उनके जो एमएलए का जो वोट है उसका एडिशन। सपोज यूपी का 10 है, बिहार का 5 है, महाराष्ट्र का 8 है, राजस्थान का 12 है, वगैरह वगैरह। तो इसका सबका एडिशन करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके, है ना, उनके जो उसका जो नंबर है उससे उसको डिवाइड करना होगा। समझ में आया? हाँ? ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए एंड वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। समझ में आया इसको? ये फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन डेफिनेटली गेट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया इसको, फॉर्मूला को? वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमएलए एंड वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी। एमएलए population of the state divided by members of that state in the state legislative assembly into 1/1000। एमपी के बारे में सबका एमएलए के वोट का सबका एडिशन करो, और जितने भी मेंबर्स है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उनको उससे टोटल नंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से उसको डिवाइड करो। ठीक है, तो इससे आपको एमपी के वोट की वैल्यू पता चलेगी। ओके, और लास्ट और एक इसका फॉर्मूला लिखो, इलेक्ट्रोल कोटा। अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इलेक्टोरल कोटा, ये इलेक्ट्रोल कोटा एक ये है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक प्रोसेस में। तो इसका जस्ट फॉर्मूला लिखो, इलेक्ट्रोल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, total number of valid votes polled, total number of valid votes polled divided by 1 + 1 is equal to 2, और ये +1। देखो, इलेक्ट्रल कोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे +1। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड ये डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, और ये +1। ओके, या देन राइट डाउन क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा, क्वालिफिकेशन एज अ qualifications for election as president, qualifications for election as president, है ना। तो जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बताइए, सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? what should be the first qualification of a person? The citizen of India. Yeah, citizen of India. So first is just keyword लिखो, citizen of India, citizen of India। Second qualification, 35 years of age। एज कितना? 35 years कंप्लीट होना चाहिए। ओके,
Third qualification. He should be qualified. He should be qualified for election. 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 He should be qualified for election as a member of the Lok Sabha. He should be qualified for election as a member of the Lok Sabha. He should be qualified for election as a member of the Lok Sabha. Fourth, he should not hold any office of profit. He should not hold any office of profit under any government. म्हणजे त्याला ज्याच्यापासून पगार वगैरे वगैरे मिळतात तर अशा कुठल्याही गव्हर्नमेंटच्या पदावरती तो व्यक्ती नसावा. He should not hold any office of profit under the government, any government, union government, state government, local authority or public authority नसावा. ओके, तर आता याच्यामध्ये आणखी एक महत्वाचं आहे कि जैसे जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो है, she is the sitting president of our country. Okay, she is currently the president of country. So suppose अगर next time उनको अगर इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट का, तो क्या वो लड़ सकती है? Can she fight for the election Yes, as a sir. president? Yeah. Yes. So even the sitting president, okay, even the sitting president or the vice president, okay, or the governor, कोई भी स्टेट के गवर्नर है ना, who is the governor of Maharashtra at present? Who is the governor of Maharashtra at present? You should have knowledge about all these things, हाँ? कि ध्यान में रखो. Who is the governor of Maharashtra at present? महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? Ask to the Google. Ask to the Google. But you won't get this opportunity in the examination hall. Huh? Keep in mind this thing. So you should have this kind of information on your fingertips. Sir, Ramesh Bias. Ramesh Bias, sir. Okay, so whenever we are taking a name of some honorable person or those who are on a constitutional position, so as a student, one should use honorable, respected, okay, because they are on the constitutional positions, right? तर answer देताना लक्षात ठेवा. In a SSB interview, earlier I have told you, okay, this important things. These are minor but important. Okay. So anyway, so Honorable Ramesh Bias Ji is the governor of Maharashtra state, and then so the president, vice president, governor of state, minister of the union or any state. Okay, so these positions or the persons, those who are holding these positions, they do not comes under this definition of office of profit.
ओके, हाँ मतलब कोई भी सपोज यूनियन के मिनिस्टर हो या स्टेट के मिनिस्टर हो, है ना, गवर्नर हो किसी भी स्टेट के, या फिर अपने सर्विंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। मतलब इनको कोई ऐसी जैसे इनकी रेगुलर पेमेंट ये नहीं होती है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई रेगुलर पेमेंट मीन्स जैसे ऑफिसर्स लोग वगैरह होते हैं, है ना, दोज हु आर गेटिंग रेम्युनरेशन, सॉरी, सैलरीज वगैरह। Okay, so since these people, they are not like that, their positions are not like that, so they do not come under the office of profit, and that's why they are qualified. They can appear for the presidential election. Okay, then write down further. Further. For the nomination of a presidential candidate, for the nomination of a candidate, for presidential election, it must be subscribed by for the nomination of a candidate for the presidential election, it must be subscribed by at least 50 electors as proposers, and 50 electors as seconders. "50 electors as proposers and 50 electors as seconders." तो 50 जो लोग, 50 electors means what? Electors means those who are participating into the election of the president. So suppose if any person is forwarding his nomination form for the presidential election, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना फॉर्म भरता है, तो उसके फॉर्म को, उसके नॉमिनेशन को, है ना, उसके नॉमिनेशन को फॉर द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, उसका जो नाम है वो जो उसके इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट होते हैं, ऐसे 50 लोगों ने उसके नाम को प्रपोज करना चाहिए। ओके, एज अ प्रपोजर्स, और 50 जो लोग हैं उन्होंने उसको अनुमोदन करना चाहिए। तो अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन for the election of the president, 50 electors as a proposers and 50 electors as a seconders. Okay, write down further. Candidate जो भी presidential election के लिए appear होते हैं, candidate need a security deposit. Candidate need to deposit a security deposit of rupees 15,000. Candidate need to deposit a security deposit of rupees 15,000 in the Reserve Bank of India. In the Reserve Bank of India, to stop. The security deposit is liable. The security deposit is liable to be
forfeited, FORFEITED. The security deposit is liable to be forfeited, FORFEITED. Forfeited मतलब उसको अपने मतलब जब्त करना है ना, forfeited. द सेक्यूर मतलब वो जो 15,000 है वो जब्त हो जाते हैं. क्यों? द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लाइबल टू बी फॉरफेटेड इफ कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर, if candidate fails to secure, if candidate fails to secure 1/6 of the votes, if candidate fails to secure 1/6 of the votes, 1/6 of the 1/6 of the votes polled, POLLED. If candidate fails to secure 1/6 of the votes polled. अच्छा, अगर कोई आपको अगर प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में, तो ये देखो, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो कैंडिडेट है, अ पर्सन हु इज अपेयरिंग फॉर और फाइटिंग अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सो उसके नाम को 50 जो लोग हैं, मतलब जो दोज हु आर इलेक्टर्स, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इनटू दैट इलेक्शन, सो ऐसे 50 लोगों ने उसके नाम को प्रपोज करना चाहिए. तो उनको प्रपोजर कहा जाता है. 50 इलेक्टर्स एट अ प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर्स. सेकेंडर्स मीन्स अनुमोदन देने वाले. और फिर उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट इज ऑफ 15,000 विच ही और शी नीड टू बी डिपॉजिटेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और अगर उसे कोई भी इलेक्शन का, ये बात ध्यान में रखना, एनी इलेक्शन, if they fail to secure 1/6 of the votes out of the total votes polled, जितने भी मतदान हुए हैं उसमें से अगर किसी भी इलेक्शन में, नॉर्मली ये रूल सभी इलेक्शंस के लिए है, अगर 1/6 वोट नहीं मिलते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, अनामत रकम कहा जाता है उसे. ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होता है. सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होता है. सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होना मतलब उस व्यक्ति को जो टोटल वोट्स है उसके 1/6 भी वोट्स नहीं आना. ओके, हाँ, 1/6 मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने हो गए? 16.66. मतलब 16 लोगों ने, 100 लोगों ने अगर वोट दिया है तो आपको कितने वोट चाहिए? 16.66, राइट. हाँ, तो उतने वोट अगर मिलने चाहिए आपको. आप सपोज अगर 1000 लोगों ने वोट दिया तो 166 वोट चाहिए आपको, राइट. अगर इतना अगर नहीं मिलता है, 100 में से अगर आपको 16 लोगों का, 17 लोगों का वोट नहीं मिलता है, 17 पकड़ लो, तो देन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जब्त हो जाता है. ये बात ध्यान में रखो. ओके, नाउ टेल मी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, कोई एक व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पे चुनी जा रही है, गई है, तो प्रेसिडेंट होने के बाद प्रेसिडेंट को वोट कौन देता है, शपथ कौन देता है? Who administered oath to the President of India? Who administered oath to the President of India? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है?
भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन देता सर है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ हाँ बोलो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं रहते तो कौन देता है? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है, मतलब वो एब्सेंट है किसी कारण के वश, तो कौन देता है? सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल. Okay, write down further. The oath, write down further. The oath to the president. The oath means shapat dena. The oath to the president is administered, और आप आपके समझ के लिए given लिख सकते हो. The oath to the president is given by the Chief Justice of India. At present, who is the Chief Justice of India? At present, who is the Chief Justice of India? चीफ जस्टिस कौन है भारत के अभी? Who is the Chief Justice of India at present? सर ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ सर। हाँ, ऑनरेबल धनंजय चंद्रचूड़ सर. ओके, और उन्होंने, धनंजय चंद्रचूड़ जी ने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हम कह सकते हैं, डायरेक्शन हम कह सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल डायलेमा इन महाराष्ट्र. यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज अ पॉलिटिकल डायलेमा. डायलेमा मतलब क्या है? कि राजकीय एक प्रकार से बहुत ही प्रॉब्लम महाराष्ट्र में शुरू है साल भर से. आप लोगों ने देखा होगा कि इन महाराष्ट्र earlier there was a Shivsena was united, then Shivsena divided, Rashtrapati united, Rashtrapati divided. Okay, and then there is a issue of the disqualification of the members of the state legislative assembly. एक ग्रुप कहता है कि हमारे जो एमएलएस है वो वैलिड है, दूसरा ग्रुप कहता है कि हमारे वैलिड है. तो इसी like with respect to this issue only, the ball is pending with the state legislative assembly speaker of Maharashtra, नार्वेकर साहब जो है ना, तो उनको डिसाइड करना है, उनको जजमेंट देना है, उनको जस्टिस देना है कि what is there, okay, what is as per the constitution, what is as per the law क्या कहता है ना. तो उसके लिए ऐसा हो रहा है कि काफी महीनों से उस उलझन को सुलझाया नहीं जा रहा था, और एलिगेशंस लगाए फिर जो पार्टीज है अपोजिशंस वाली, उन्होंने कि बाबा द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, दे आर just passing his time. Okay, they are not taking quick decision, fast decision with respect to this important issue. And then under this background, just yesterday, Supreme Court also directed very strict directions given by the Honorable Supreme Court of India, that is Honorable Chief Justice of India, Dhananjay Chandrachud sir, that the state legislative speaker, okay, the assembly speaker of the Maharashtra State Legislative Assembly, he should not waste his time and he should take a quick decision with respect to this specific issue. You must have gone through the if you have gone through the newspaper, or if you are at least watching the news channels. Okay, last time also I have told you that you need to watch news channels on regular basis. At least at the evening, है ना, शाम को सोते वक्त आप लोगों ने न्यूज, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट न्यूज देखना बहुत जरूरी है.
You will come to know about whatever whatever I am teaching you with respect to economy, constitution. So you will come to know, okay, the things are like this only, like that only. Okay, the things are happening. Sir ने हमें बताया था, सुप्रीम कोर्ट बताया था, okay, प्रेसिडेंट बताया था, एमपी बताया था, एमएलए गवर्नर बताया था. तो you will come to know कि okay, these are the things and these are the things which are happening in this direction, है ना. तो फिर वो आपको लिंकअप होगा, वो आपको समझ में आएगा. ओके, तो ये बात पे ध्यान में रखो, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है. राइट. सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या लिखा आपने? तो the oath of the office to the president is administered by the chief justice of the India and in his absence and in his absence comma the senior most judge and in his absence the senior most judge of the Supreme Court available and in his absence the senior most judge of the Supreme Court available. Okay, chalo. Then write down. The tenure of president is 5 years. Write down fast. The tenure of the president is 5 years. He give his resignation. Resignation matlab rajinama. He gave his resignation at any time to the vice president. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना जो, देखो प्रेसिडेंट को ओथ जो देते हैं, शपथ जो देते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं या फिर वो अगर एब्सेंट रहते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको एड्रेस करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन एट एनी टाइम to the vice president, full stop. He can also be removed. He can also be removed. He can also be removed from the office. He can also be removed from the office before the completion of his term by the process of impeachment. IMPEACHMENT. He can also be removed from the office before completion of his term by the process of impeachment. 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 By the office by the process of impeachment. Impeachment को कहा जाता है मराठी में या हिंदी में महाभियोग. महाभियोग. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है महाभियोग की.
Okay, so removed from the office before the completion of his term by the process of impeachment. Write down. Indian president may be elected. Indian president may be elected for any number of terms. Indian president may be elected for any number of terms. मतलब कितने भी बार भारत का प्रेसिडेंट कितने भी बार इलेक्ट हो सकता है, लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसके लिए कितने टर्म है यूएस के प्रेसिडेंट? However, USA president cannot be elected. However, USA president cannot be elected more than twice. Cannot be elected more than twice. However, USA president cannot be elected more than twice. बाद में लिखो. Write down the reason. Write down the impeachment of president. Impeachment ये लिखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉप करेंगे. Impeachment of president. Mahaview. Impeachment of president. So you can get a question कि on what basis, on the basis of what reason the president is removed. Okay, on the basis of what reason the president is removed. So president को जो remove किया जाता है वो किस लिए remove किया जाता है? For the reason of the violation of the constitution. संविधान का अगर अपमान हुआ, संविधान का अगर किसी कारण अपमान हुआ तो प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग चल सकता है, उनके खिलाफ impeachment हो सकती है. Write down. President can be removed. President can be removed for violation of the constitution. President can remove for violation of the constitution. President can remove for violation of the constitution. Okay. Write down further. The process is the process. तो उसके खिलाफ जो impeachment आता है तो कैसे आता है वो देखो. The process is number 1. The charges, मतलब impeachment के जो charges होते हैं उसके खिलाफ जो impeachment है ना, the charges can be initiated. The charges can be initiated by either House of Parliament. The charges can be initiated by either House of the Parliament. Okay, so जो प्रेसिडेंट है उसको जब निकाला जाता है तो उसे निकालने के लिए जो पार्लियामेंट का लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट के चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं. तो ये दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. द रीजन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, रीजन व्हाट इज द रीजन क्यों impeachment, why the impeachment process is initiated against the president?
What is the reason? The violation of the constitution. But violation of the constitution क्या है? That is not described. That is not described in the constitution. But it इतना बताया है कि violation of the constitution is the reason to initiate, to take action against the president and to initiate a process of impeachment. And the charges of charges, suppose अभी किसी लोकसभा के मेंबर को लगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का अपमान किया है, राष्ट्रपति ने किसी संविधान के प्रोविजन का उल्लंघन किया है, सो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मींस लोकसभा या राज्यसभा का उसके खिलाफ प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है. तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि which of the following statement with respect to the impeachment of the president is true, उसमें आपको अगर बोलेंगे कि for the impeachment of the parliament the process can be initiated only in the Lok Sabha, so that is not true. Either house of the parliament means what? Either house of the parliament means what? Lok Sabha or Rajya Sabha, right? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Okay, the impeachment charges can be initiated by either house of the parliament. Okay, then write down. These charges, second, इसको point दो. First point ये हो गया. Second point, these charges should be signed by, these charges should be signed by 1/4 मतलब 25%, 1/4 members of the house. These charges must be signed by 1/4 of the house, 1/4 members of the house. These charges should be signed by 1/4 members of the house that framed the charges. These charges should be signed by 1/4 members, 1/4 members of the house, 1/4 members of the house that framed the charges. These charges should be signed by 1/4 members of the house that frame the charges. ओके तो जिस सदन में मतलब लोकसभा में अगर आए तो लोकसभा, राज्यसभा में आए तो राज्यसभा, तो इम्पीचमेंट के चार्जेस जिस सदन में इनिशिएट हुए हैं उस सदन के 1/4 मेंबर्स में मतलब 25% जो मेंबर्स है, ओके, उन्होंने इस चार्जेस को साइन करना आवश्यक है. तो फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट्स आर इंटरलिंक बिकॉज जहां पे वो चार्जेस इनिशिएट हुए उसी सदन के मेंबर्स ने, मतलब इफ द चार्जेस इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा तो लोकसभा के मेंबर्स, इफ द चार्जेस इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा तो इन द राज्यसभा के मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स ने उसके ऊपर साइन करना जरूरी है. ओके एंड a 14 days and a 14 days 1/4 and a 14 days notice should be given to the president, and a 14 days notice should be given, and a 14 days notice should be given to the president. So president को 14 दिन की नोटिस देना जरूरी है. ओके, थर्ड पॉइंट तो देखो हमने कहा पहले कि किसी सदन में ओरिजिनेट होना चाहिए, जिस सदन में ओरिजिनेट हुआ आके 25 मेंबर्स ने 25% मेंबर्स ने मतलब 1/4 मेंबर्स ने उसको साइन करना है और प्रेसिडेंट को 14 दिन की नोटिस भेजनी चाहिए. ओके देन थर्ड पॉइंट, आफ्टर द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन मतलब महाभियोग का अगर ठराव पास हो गया, आफ्टर द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास्ड, after the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 मतलब 66%. Okay, 2/3. After the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house, after the impeachment resolution is passed
by a majority of 2/3 of the total membership of that house after the impeachment resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house majority of 2/3 of the total membership of that house मतलब जिस हाउस में वो चार्जेस इनिशिएट हुए उन्होंने साइन किया 1/4 मेंबर ने मतलब 25% मेंबर ने फिर उन प्रेसिडेंट को 14 दिन की नोटिस दी और फिर उसी सदन के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों ने मतलब 2/3 मेजोरिटी 66% मेजोरिटी ने उसको इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास किया ओके सो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस सो लोकसभा में फॉर एग्जांपल इनिशिएट हुआ है और लोकसभा में अगर 542 मेंबर्स है तो 542 के जो 2/3 मेंबर्स हैं उन्होंने वो रिजोल्यूशन पास करना आवश्यक है ओके सो द आफ्टर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाय majority of the 2/3 of the total membership of that house, it is sent to the other house. It is sent to the other house. मतलब दूसरे हाउस में फिर ये पास होने के बाद दूसरे हाउस में उसे भेजना है which should investigate the charges. तो देखो तीन जो हमने ये पॉइंट्स देखे तो तीन पॉइंट्स में क्या है कि इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएटेड इन आइदर हाउस फिर जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में तो लोकसभा में राज्यसभा में तो राज्यसभा में तो 1/4 मेंबर्स ने उसके ऊपर साइन करना चाहिए चार्जेस पे और फिर 14 डेज की नोटिस देनी चाहिए थर्ड इसमें क्या है कि 2/3 मेंबर्स ने उसको इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को ठराव को पास करना चाहिए और फिर वो जो रिजोल्यूशन है वो महाभियोग का जो ये है ओके उसे दूसरे सदन में भेजना चाहिए इट शुड बी सेंट टू द अदर हाउस विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ओके विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस तो तीन इसमें हमें ध्यान में आ गया कि ये ऐसी प्रोसेस रहेंगी और फिर जो सेकंड सदन है वहां पे वो आने के बाद रिजोल्यूशन आने के बाद सेकंड सदन के जो लोग हैं दे विल इन्वेस्टिगेट दोज चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट ओके देन फोर्थ पॉइंट लिखिए द प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर the president has right to appear and to be represented. The president has right to appear and to be represented at such investigation. Fourth point. Then fifth point, write down. तो प्रेसिडेंट को ऐसे इम्पीचमेंट के सामने इन्वेस्टिगेशन के सामने अपेयर होने का अधिकार है के बाद क्या है द प्रेसिडेंट हैज द राइट to appear and to be represented मतलब अपनी जो ये है ना खुद को व्हाट यू कैन से लाइक अगर उसके खिलाफ कोई चार्जेस है तो हम लोग ने क्या हमारा ये पेश करते कि बाबा आई एम नॉट गिल्टी फॉर दैट ओके सो ही कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन ओके then write down fifth point if the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution if the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution by a majority of 2/3 of the total membership if the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution by a majority of 2/3 of the total membership comma then president stands removed
then president stands removed from his office, then president stands removed from his office from the date, then the president stands removed from his office from the date on which the resolution is so passed. Then the president stands removed from his office from the date on which the resolution is so passed. So stop. Write down last sentence. Impeachment is an quasi-judicial process. Impeachment is an quasi मतलब अर्धन्यायिक, quasi-judicial process. Impeachment is an quasi-judicial process. Full stop. Here, the nominated members of the parliament participate. Here, the nominated members of the parliament can participate, but the elected members of the state assemblies and the UT and the union territories do not participate, है ना? Do not. देखो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी और दिल्ली के। लेकिन प्रेसिडेंट को अगर निकालना है उस पद से, तो उस पद से निकालने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर होती है उसमें पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन जो स्टेट असेंबलीज होती है उस स्टेट असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ठीक है? So I hope you understood. You just go through whatever dictations I have given, because in this today's session, almost we have completed major part of the president. Tomorrow I will discuss with you the responsibilities and the authority and the powers and the functions of the president in next half an hour, and we shall finish president, vice president also. Then we shall go for the prime minister, council of minister वगैरह। ये आपको अगर समझ में आ गया तो ये आपको एक मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं डिटेल में ही ले रहा हूँ ऐसे। ओके, एंड देन यू वुड कम टू नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, स्पीकर वगैरह, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, एटलीस्ट इतना तो मैं आपका कर दूंगा कि इफ यू गेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू वुड डेफिनेटली अटेंड दैट क्वेश्चंस in your ND examination. इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को उसके पद से निकाल देना, उसको हिंदी मराठी में कहा जाता है महाभियोग। इम्पीचमेंट मीन्स रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोजीशन, और उसके लिए कारण क्या कहा जाता है? वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का किसी ना किसी माध्यम से, किसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति के द्वारा अपमान हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन हुआ, और अगर किसी राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर ने उस मुद्दे को उठाया, उसको उस सदन के 1/4 लोगों ने, 1/4 लोगों ने अगर उसके ऊपर उस इम्पीचमेंट के प्रोसेस को अगर इनिशिएट किया, और फिर 2/3 लोगों ने उसको पास किया दोनों भी सदनों में, तो फर्स्ट सदन ने पास करने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरे हाउस में जिस दिन वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होता है, उस दिन प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर पोजीशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड।
If you have any doubt, we can continue tomorrow. Tomorrow we are having both classroom and online lectures. So do, all of you do come to the classroom lecture. Okay? चलो तो क्लासरूम लेक्चर के लिए आओ मैक्सिमम लोगों ने